Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video session on daily news and editorial analysis dated 7th of October. Through this video session, I'll make you understand some of the important news and editorial that would be relevant for both prelims and mains examination. This video session is meant to help basically all the aspirants who are appearing for the civil services examination. This will be a content enriching session. We'll get the idea and the importance of the news that is relevant for the examination. So without any further ado, let's get started. And before I begin this session, I would just like to tell you that first I'll be showing you the highlights and the glimpse of the news that I'll be discussing with you for today. For today, the first important news is about the tribunal ruling when it comes to OTT and what are the TRAI guidelines that is there. The second important news talks about the petition that is filed before the Honorable Supreme Court challenging the various bill that has been passed as a money bill. The third important news talks about the G20 Parliament Speakers Meet. That is again important. India will see the participation of Canada and it will raise its concern there as well. The other important news talks about Manrega budget shortfall. We have seen that ministry has come up with the details stating that the fund is not more, right? Now they are looking for the fresh allocations. We'll conclude the session with the editorial that talks about the United Nations SDG goals and India's target and achievement in context of the national education policy. So this is all we'll be discussing with you for today. So let's get started with the first news of the day. So first is about the TRAI that cannot regulate the OTT platform. This is a ruling that has come up from the tribunal. Specifically, अगर tribunal की बात करें, this is the part of TSAT, that is the Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal. इन्होंने OTT को लेकर के कुछ ruling दी है that the TRAI guideline will not be applicable, and they said that it is not governed by TRAI. Specifically, this was regarding a matter which was there with regards to Hotstar and its publications for different matches which was there for the cricket team. So in this context, the ruling is there. Now this will give you the clarity that how the tribunal has come up with overtaking the TRAI rules and mandate which is there. So what are the other details from the tribunal order? Now this is specifically important for mains as well. कई बार आपसे मेंस में डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं इस ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को लेकर के. ये एंट्री ऑर्डर पेश की गई है. सो दिस इज एन एंट्री ऑर्डर दैट इज देयर बाय द ट्राइब्यूनल एंड दिस सेड दैट द ओटीटी प्लेटफॉर्म आर द आउटसाइड द परव्यू ऑफ TRAI एक्ट. सो जो TRAI एक्ट है उसके परव्यू से बाहर है OTT प्लेटफॉर्म की रेगुलेशन. दिस इज व्हाट द ट्राइब्यूनल हैज सेड एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी परमिशन और लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. This is what the tribunal, that is the Telecom Dispute Settlement Appellate Tribunal has said. Now there was a petition that was filed. This was actually filed by the All India Digital Cable Federation against the Star India Private Limited, and they are holding the app Hotstar, जिसी के context में ये बातें और play file की गई थी. Now they have come up that the Star India has come up with the free mobile streaming of ICICI Cricket World Cup on Disney Hotstar, which is a discriminatory as per the TRAI rules. तो इसी TRAI rules को गाइडलाइन देते हुए या फिर इसकी बैकिंग करते हुए जो ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन है, राइट इन शॉर्ट फॉर्म AIDFC ने बेसिकली अप्रोच किया था ट्राइब्यूनल को, एंड द ट्राइब्यूनल हैज कम अप विद द जजमेंट दैट द TRAI mandate and guideline is not applicable in the Hotstar, right? So this is what the complete case is. The matches are accessible on the Star Sports TV only for the paid subscription. This is what the All Digital Cable Federation has said, but the ruling has categorically rejected the petition and they said that TRAI has no power to regulate the OTT. Now, when it comes to other details, this is something specifically for mains examination also. आपके लिए जानना जरूरी है कि किस तरह से OTT इंडिया में राइज किए, right? So 1.8 to 2.2 billion OTT sectors. This is for 2021, right? And it is expected that the total CGR होगी that will be close to 22 to 25%. This is a report where it says that by 2030 this can be the value, right? And almost the total subscription, I mean the total people that is using as of the paid OTT, it is 70 to 80 million. It's quite high number in India specifically.
और OTT के इन्वेस्टमेंट में बढ़ी है। ओरिजिनल कंटेंट को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेशंस भी की हुई है। देयर इज अ डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी बिल व्हिच इज देयर। इन दैट कंटेक्स्ट ओवरऑल दिस सेक्टर हैज अ ह्यूज ग्रोथ। ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ काफी ज्यादा देखी गई। Now, about OTT, if you see, people are actually using mobile phone to get the things done, right? And OTT can cause that they are already governed by the IT Act. IT Act जो government की है, इसमें भी amended किए गए हैं, changes लाए गए हैं. The IT Act of 2001 has been brought in with major changes. और उसको context में देते हुए government ने data protection bill भी लाई थी, right? So DP bill is already there. Now, if you see the global trend, I mean the specific laws are there with United States and Qatar. Then we have restrictions in country like Russia. Russia is a country जहाँ पे OTT को लेकर के restrictions है. Then we have country like China, followed by UAE and then Iran. So these are the country where restrictions are put in place. और अगर no formal regulations की बात करें, Israel, Japan, Thailand and Argentina are the countries, right? Alternative apps जो use किए जाते हैं वो साउथ कोरिया, जापान और चाइना में भी use किए जाते हैं. Now, if you look at the part of the streaming, I mean the things that is working and the total market structure. So Netflix tops the ranking 20%. This is followed by Amazon Prime. So both has a total percentage of share with 20%. Then we have Disney Hotstar, G5, and these are the utter details of the international brand on the OTT platform, right? You can use these example like Netflix and Amazon Prime if required anywhere in the general studies paper 3. Now, significant order है ये, खास करके जो ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दी है उसकी क्या सिग्निफिकेंस रहेगी. It holds that the ongoing debate over the regulations for the OTT services. As of now, before like a year back, there was no OTT regulations. अगर regulations की बात करें, there was no regulation as such. Now, after this order, it will make things more clear for the TRAI as well, that how far they can have a regulations, right? So this is a TRAI, just to correct, TRAI, that is Telecom Regulatory Authority of India. Now, TRAI and the Department of Telecommunications has been attempting on regulating the OTT platform. और Ministry of Electronics ने इस तरह की चीजों को पोस्ट की. So there are triangular thing that is working out, right? The one, there is a DOT which is there. Then we have the part of ministry which is there, and Ministry of IT that is operating, and the other private player that is there. So they need to have a proper coordinations so that this platform, which is again making and contributing to the economy as well and entertainment for the people, should have a right regulations. Now, IT Ministry versus DOT over OTT regulations की अगर बात करें, specifically IT Ministry ने और DOT के जो clashes हैं rules को लेकर के, they have said that under the allocations of the business rule, the IT based communication services are not the part of DOT. This is what the IT Ministry has said, that DOT की इसमें कोई role नहीं, right? This is the one point. Now, other point, that the conversation has been centered around the OTT communication services like WhatsApp. Now, WhatsApp is also categorized under OTT platforms. और draft copy की अगर बात करें, जो draft telecommunications bill है, that was sent to inter-ministerial group for consultation in May. और उसने objections raise की हैं that the DOT is learned to have gone back from the withdrawal of the reframe the portions of the laws which will regulate the OT communication services. तो OTT communications को लेकर के खास करके IT ministries में and Department of Telecommunications में clashes हैं. This need further clarification, right? And you can expect a direct question in the mains examination जहाँ पे आपसे OTT को regulations को लेते हुए क्या क्या regulations हैं इंडिया में, and how are the clashes that is coming, how the private players will also have to play an important role. This can be asked in the examination. Now, moving ahead, Supreme Court to hear money bill issue. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक प्ली को सुनने का डिसीजन दिया है. दे हैव बीन सेइंग दैट दे विल हियर द पिटिशन. दिस वाज बाय द श्वेता मंगल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया. नाउ दिस विल सेट द प्रेसिडेंट हाउ गवर्नमेंट इज एक्चुअली पासिंग अ नॉर्मल बिल. अगर नॉर्मल बिल की बात करें, जो नॉर्मल बिल हाउस में पेश होती है, उसको मनी बिल के तौर पे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बिल को पास किया. सो इज गवर्नमेंट फॉलोइंग द राइट डायरेक्टिव्स, द राइट रूल्स as per the money bill? This is what the Supreme Court will hear. Now, 7 judge की bench है. This will include the Chief Justice of India. Chief Justice of India, Mr. D.Y. Chandrachud, will also be the part of the bench that will see how the money bill route, I mean the money bill route was actually taken for the passage of the bill. This is the main point कि money bill को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी bill को pass की गई है, taking the money bill.
And in the recent, some legislation has been passed. The setting up of this particular seven bench judge come after the amendment that was brought in the Prevention of Money Laundering Act, जो PMLA की एक्ट है. This is an important topic. यूपीएससी ने मेंस में भी ऑलरेडी इस पे सवाल पूछे हुए हैं. डू चेक इट आउट. तो इसमें जो चेंजेस लाई गई थी उसको मनी बिल के तौर पे पेश किया गया था. सो दिस वाज प्रेजेंटेड एट अ मनी बिल. एंड यू नो मनी बिल इज समथिंग विच इज मेंशन अंडर आर्टिकल 110. आर्टिकल 110 के अंदर इसकी मेंशन की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन. आई टेल यू द डिटेल अबाउट दिस एज वेल. The finance minister has passed the finance act in 2015, 16, 18 and 19 and brought crucial amendment to the PMLA, that is the Prevention of Money Laundering Act. Now money bill के definitions को अगर देखें, article 110, this is what I was talking, this is article 110. I think most of you must be aware. ये define करती है money bill को. और इंडिया में money bill is a type of legislation that relate to appropriations of money from the CFI, that is Consolidated Fund of India. और मेन फंक्शंस गवर्नमेंट के अंदर की जाती है, जितनी भी फंड्स है उसकी अप्रोप्रिएशंस बिल निकलती है, देन ओनली इट कैन बी राइट. मनी बिल आर टिपिकली रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर such as taxations, public expenditure and public debt. So these are the three important component of a money bill, right? And money bill can only be introduced in Lok Sabha. This is an important point for prelims examination. अगर इसकी इंट्रोडक्शंस की बात करें, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जा सकती है एंड राज्यसभा डू नॉट नीड कंसेंट फॉर, देयर इज नो नीड फॉर द राज्यसभा ऑफ द कंसेंट. So this is something, these are some of the basic points that you necessarily need to know for the part of the money bill. And the other important part of the bills that is there, that is also essentially necessary for you to know, is the different categories of bill. First we have money bill, then we have finance bill, which has two category, that is finance bill category 1 and finance bill category 2. तो बहुत सारे list हैं. I have given all the list over there. If you want, you can pause this video, you can either take the screenshot और जो basic important चीजें हैं वो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं. Now, moving ahead with the other challenges, अभी आधार और ट्राइब्यूनल रिफॉर्म को लेकर की भी ये जो बिल्स थी, इसको गवर्नमेंट ने एज अ मनी बिल रिलीज किया था, राइट. दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस बिल एज मनी बिल. नाउ दिस हैज आल्सो रेज्ड कंसर्न दैट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ध्यान में दिया कि मनी बिल के जो मनी बिल है, आधार एक्ट को मनी बिल के तौर पे लाई गई एंड इट वाज 4.1 मेजॉरिटी, 4:1 की रेशियो में मेजॉरिटी में से पास की गई थी. ट्राइब्यूनल रिफॉर्म जो कि 2019 में गवर्नमेंट ने लाई, इसको भी चैलेंज किया गया. रोजर मैथ्यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी चैलेंजेस और जो खास करके सर्विस कंडीशंस को लेकर के उसके बातों को कही. एंड 5 जज बेंच हैव स्ट्रक डाउन दिस लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड दे सेड दैट विद दिस इज इंटरफेरेंस विद द जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड इट कैन नॉट बी रेफर्ड एज अ मनी बिल इन द लार्जर कंटेक्स्ट. तो ये कुछ ऐसी डिबेट है जो ऑनगोइंग है. बेसिकली मनी बिल की मिसयूज भी आप कह सकते हैं. दिस इज अ मिसयूज विच इज देयर. तो आपको उसी कंटेक्स्ट में मेंस एग्जामिनेशन से रिलेवेंट टॉपिक्स और कंटेंट तैयार करने होंगे. नाउ द अदर न्यूज दैट इज कैनेडा टू पार्टिसिपेट इन G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट. दिस इज द 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट which will be held from October 12, 2023 in Delhi, right? So this is a part of the G20 chair which India is holding. This will continue till November 2023, right? और इसी कंटेक्स्ट में जो चाइना, खास करके अगर बात करें कनाडा के साथ हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी डाउन हुए, देयर इज अ डाउन टर्न, उसको ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट्री स्पीकर के साथ इस पर भी डिस्कशन होनी है. सो लेट्स सी हाउ फ्रूटफुल दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी एंड इंडिया विल डेफिनेटली रेज कंसर्न विद रिगार्ड्स टू इंडिया एंड चाइना रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड बायलैटरल रिलेशंस. नाउ लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि जो इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिस्प्यूट है, राइट, इंडिया एंड कनाडा, so whatever dispute is there, this is specifically with regard to the pro Khalistani issues which was there, right? So उस चीज को ध्यान में रखते हुए सारी बातों को रखी जाएगी between India and Canada diplomatic forum, and the Senate of the Canadian speaker and Senate will also be participant of this. उनके साथ ये बातें डिस्कस की जाएगी. The presiding officers will have from 25 countries. 10 deputy speaker of the G20 members will also participate. और इंडिया के अगर रिलेशंस की बात करें कनाडा के साथ, वी हैव सीन द डाउन टर्न. व्हाई? बिकॉज जो प्रो खालिस्तानी लीडर्स की डेथ हुई उसमें उन्होंने सेपरेटिस्ट लीडर के डेथ को लेकर के इंडिया का एक सब्सटैंशियल रोल कहा था. और इंडिया ने अपने स्टैंड में कहा कि जो कनाडा की गवर्नमेंट है, द कनाडा गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एक्टिवली वर्किंग टू स्टॉप द पार्ट ऑफ प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट विच हैज एक्चुअली इम्पैक्टेड टेम्पल्स एंड द काउंसलेट इन कनाडा.
नाउ सस्टेनेबल ग्रोथ इज समथिंग दैट विल बी द प्रायोरिटी, और ये थीम भी है. ऑलमोस्ट थीम की बात करें, पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, दिस इज अ थीम विच इज देयर. सो ये थीम के अंदर डिस्कशन होनी है. और G20 की जो मीटिंग है दैट विल एलाबरेट ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दिस इज SDG goals. Then it will have energy transitions, transformation in people life through the digital public platform, right? So this will be the public digital platform, and women-led development, or you can say women empowerment. So these are the important areas of concern, or the sessions will focus on these four important priorities. Now, Manrega run out of fund. This has been something which has been reported frequently. और इस बार जिस तरह से allocations report की गई हैं, this is by the government ministries itself. Ministry of Rural Development ने से basically जो data release किया उसमें कहा है कि जो मनरेगा के funds हैं, they are running short of fund, and उन्होंने फिर से Ministry of Finance को basically कहा है कि आप और fund release करें, supplementary fund जो है release करें. Now, the budget allocations, as you know that this year budget allocations were 18% low. जो total allocations हैं उसमें 18% की गिरावट देखी गई है. Like for earlier there was 673,000 crore rupees which was there, but for this year only 60,000 crore rupees was given for मनरेगा fund. तो ये एक बहुत हद तक डाउनटर्न है मनरेगा के फंड में. एंड 6 मंथ में ये सारी फंड इलैप्स कर गई है. दिस हैज बीन लाइक 6 मंथ, क्लोज टू 6 मंथ इज लेफ्ट, और इसमें पूरे पैसे खत्म. According to the sources, September 15, Ministry of Rural Development has approached Ministry of Finance for additional 23,000 crore rupees. ये मिनिस्ट्री ने एक्चुअली डिमांड किया है, Ministry of Rural Development. I will show you a data. I mean, this will help you understand कि किस तरह से allocations में गिरावट आई है. 2021 में ये 61,500 थी, उसके बाद 73,000, then this continued for 73,000. It was expected इस टाइम पे कुछ सर्ज होंगी, but it was not the surge. It was seen the downturn with 60,000 rupees, 60,000 crore rupees only, right? Now, demand driven employment बताई गई है मनरेगा को. The Ministry of Rural Development उन्होंने कहा है the fluctuation is there because it's a demand driven, और demand जैसे बढ़ती है उस तरह से funds की utilizations भी ज़्यादा होती है. Every adult member in a household is allowed to get 100 days jobs. It's a mandatory. अगर ये नहीं मिलती हैं, then a compensation has also been there. A provision is there, right? So the scheme envisages for 100 days guaranteed job to a financial year for adult member of a unskilled family workers, or it cover all district of India except 100% urban population. तो जो metropolitan cities हैं वो इसमें excluded होते हैं. They are excluded from the मनरेगा. Now, moving ahead with the editorial for the day that talks about the United Nations Sustainable Development Goal and how the education has played an important role in signifying the part of SDG. So what I'll be discussing with you in this, first we'll see the National Education Policy or SDG के क्या targets हैं, किस तरह से ये aligned है, strengthening the research, teaching or bottom line. And before I start, just have a glimpse of the SDG target that is there with us. तो उससे पहले बात करते हैं कुछ स्टार्टिंग इंट्रोडक्शंस की. जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें 17 गोल्स हैं एक्चुअल में. आई विल शो यू ऑल 17 गोल्स दैट इज देयर, एंड दिस हैज 169 टारगेट व्हिच इज एक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय 193 कंट्रीज. तो इतनी कंट्रीज ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और एक्नॉलेज किया है. द टोटल नंबर ऑफ कंट्री इज 193. Now, what is the aim? The aim is to reduce the poverty, inequality, educations को बढ़ावा देना, जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं खास करके जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करना, और रिक्वायरिंग द ग्लोबल कॉपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक एक्शंस फॉर बेटर फ्यूचर. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन दैट इज रिक्वायर्ड इन कमिंग अप विद द एसडीजी टारगेट्स. और पिछले 8 सालों में अगर बात करें, 8 years डाउन द लाइन, द प्रोग्रेस दैट इज सीन इज नॉट एज अप्रिशिएटेबल एज इट वाज एक्चुअली डिजायर्ड, राइट? तो इसमें जो रिजल्ट होने चाहिए वो नहीं. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि एसडीजी के जो टारगेट्स है वो आपको पता होने चाहिए. दीज ऑल 17 टारगेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल कॉल इट एज अ गोल बिकॉज दिस हैज बीन 17 गोल्स. तो हर एक गोल्स आपको पता होने चाहिए. ये आपको मेंस एग्जामिनेशन में खासा हेल्प करेंगे. यू कैन इवन कोड वॉट एवर गोल इज रिलेटेड टू द क्वेश्चंस. आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे गोल नंबर के साथ लिख सकते हैं. दिस इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू लर्न इट
पेस्ट इट समवेयर वेयर यू आर स्टडिंग, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल में भी रिवाइज कर सकते हैं. Now, national education policies की अगर बात करें, see, I mean, there's a part which has been talking about the SDG goal. SDG 4 में access to quality educations की बात की गई. You can see this is SDG 4, right? Where it has been talked about the quality educations, and this has been a long history for equitable and inclusive development. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने एक्चुअली रिलीज की है, दिस इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. इसमें कुछ स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट की गई है, लाइक change in the all level of educations, priority for according the higher education as it accelerate. और इसमें जो regional languages हैं, I mean you have seen that the regional languages were also promoted, empowering people through creativity and critical thinking, and grant for the employment skills. So these are the main targets of the new education policy. Now, strengthen the research teaching. This is again the highlight of this editorial, where it talks about कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, if you see the colleges, the universities that is there, they need to align themselves in a research oriented manner. मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च सिस्टम की ज़रूरत है एजुकेशन में, जहाँ पे फ्यूचर इनोवेशंस को भी ध्यान दी जा सकती है. दीज कैन ऑल्सो एड्रेस द SDG गोल लाइक SDG 7, जहाँ पे अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात की गई है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. अगर इनोवेशंस होगी तो ये सारी चीज़ों में भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होगी. न्यू टेक्नोलॉजी विल बी देयर विच विल एड इन अचीविंग ऑल दिस टारगेट. नाउ, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करें, इट विल हेल्प सिटीजन टू बिकम as responsible towards the society, planet and our nations to achieve the life on the land, which is goal number 15. ये SDG की गोल है 50. Now, to conclude the part, अगर bottom line की बात करें, जो national education policies है, that is the demand for higher education. इंडिया में हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए डे टू डे मैपिंग और जो SDG के टारगेट्स है उसको अचीव करने के लिए लाई गई है. So you can say that the NEP, that is the National Education Policy 2020, which is there, which is actually aligned with the SDG goals, right? To accelerate the process, SDG के जो 2030 एजेंडा है उसे हमें अचीव करने की जरूरत है हायर एजुकेशन के साथ. और ये हाई टाइम है इंडिया के लिए, जहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी और के मंत्रा के साथ SDG को टारगेट को अचीव करने में डेली एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग और रिसर्च को कोलैबोरेट करने की जरूरत है. सो देयर नीड टू हैव एन amalgamations with the teaching, the research activities and the daily administrations, right? And the educational institutions need to rethink and approach the tune with the national education policy that is crucial for realizing 2030 deadline for the SDG. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि आप नोट कर पाएंगे स्पेसिफिकली फॉर मेंस एग्जामिनेशन. ऑल्सो प्रीलिम्स में आपसे SDG के कुछ बेसिक टारगेट पूछे जा सकते हैं, कुछ गोल से रिलेटेड, दैट यू नीड टू ऑल्सो रिमेंबर. सो यू नीड टू लर्न बाय द हार्ट 17 गोल्स आपको पता होने चाहिए. Now, moving ahead with the answers discussion for yesterday questions. For first question, the correct option is C. मैंने आपसे Gems and Jewel Export Promotion Council के बारे में पूछा था. So these are the explanations. Manufacturing unit काफ़ी जगह पे हैं, तो इसमें सारे statement correct हैं. So the correct option is 3. So participate, write your answer in the comment section down below. The second question of the day, that is the scientists of the United States have discovered the jumbo octopus, and the name is Gimbroctus asper. The name has been given using the fin, और ये सारी Disney elephant muskets हैं. इसकी appearance like umbrella like appearance होती है. You can check out the image, you'll get the more clarity. The correct option is A. Today's MCQ for practice, जो पहले सवाल है, that is about the National Intelligence Grid. आपको बताना है कौन सा option correct है. It's function as an integrated intelligence grid that connect with the major security forces or agencies. It was established at the Associate of Ministry of Defense Office. So what you have to do, you have to just reach out to the comment section, write your answer in A, B, C or D format, whatever you feel is correct. Now the second question of the day is about the Cronopus tree. I have already made a discussion to this in our news in focus session. अगर आपने वो देखा है, this question will be cakewalk for you. It is an invasive species of mangrove. It's indigenous to Indian continent. तो आप ज़रूर बताएं इसमें कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है. काफ़ी इजी सवाल हैं, और अगर आपने NIF में कॉर्नोकार्पस के वीडियोस नहीं देखे हैं, इट्स अ शॉर्ट वीडियो, यू कैन वॉच दैट एज वेल. So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, you can reach out to us. Any queries about test series, programs and courses, we will definitely help you in this regard.
So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. I'm signing off. Thank you so much for watching. Thank you for stay connected. I wish all the best.